Hello students, welcome back to my channel. Today I will discuss some important question on history and civics of specimen paper 2025 Icse 2025 board exam. Okay, actually before going to the portion, I just clarify you in history and civics as per the new pattern of syllabus. One is part 1, other is part 2. Part 1 bears 30 marks. Okay, out of which number 1 question is MCQ 16 marks. Then number 2 14 marks. 5 each 5 questions from history and 2 from civics. That is 2 mark each question, total 7 question, that is 14 marks. So part 1 30 marks completed. In part 2 दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में 20 मार्क्स. ये all are civics. From civics there will be 3 questions each bearing 10 marks. Okay, so one is from Supreme Court, High Court. Okay, so from judicial portion one question, and from other part, that is union legislature, president, vice president, and from that section 2 questions. So total 3 questions. Out of 3 you have to appear or write 2 questions, means 20 marks. Then from section B total full mark bearing 30 marks. There will be 5 questions and you have to write 3 questions each bearing 10 marks. So out of 5 questions, 2 is from world history or contemporary world and 3 are from Indian history. Okay. So today I am going to continue or explain some portion specimen paper 2025 history and civics, that is section B. So in section B I told you 5 questions are there. I wrote all the 5 questions, but you have to write any 3 question out of 5. Okay, so first number 6. First question is number 6. Number 6. 1 minute. Number 6. You just see the question. The Indian Rebellion of 1857 was a major uprising against the rule of the British East India Company, which functioned as a sovereign power on behalf of the British Crown. With reference to this, answer the following questions. So first question is, the British used many policies of expansion. Mention any 3 such policies. Then second question is, how did the failure of the revolt impact the Mughals and the Peshwas? Then third one is, the India Army was reorganized after 1858 to prevent the reoccurrence of another uprising. Analyze this settlement by stating any 4 changes made in the army after the revolt. Okay, so I am explaining the answer. Number 6. So number 6, the British used many policies, out of which, so ये policy for the expansion के लिए
मैनी पॉलिसीज वो फॉलो किया था। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, द डॉक्ट्राइन ऑफ लॉस, सब्सिडियरी अलायंस एंड प्रीटेक्स ऑफ मिसगवर्नेंस. Okay, as out was annexed in the pretext of misgovernance. Then number second, how did the failure of the revolt impact the Mughals and the Peshwas? Bahadur Shah was deported because he was the last emperor of Mughal and the rule of the Mughals came to an end. Second, Nana Sahib fled from the country. He was the adopted son of Bajirao Peshwa. Okay, so Nana Sahib fled from the country and the rule of the Peshwas came to an end. Okay, then third one, इंडियन आर्मी का ऊपर क्या असर पड़ा, इसके बाद इंडियन आर्मी को कैसे और रिकंस्ट्रक्ट किए. फर्स्ट वन, द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड. सेकेंड वन, यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की जियोग्राफिकल एंड मिलिटरी पोजिशंस. थर्ड पॉइंट, sophisticated weapons were not given to the Indians. Fourth one, the earlier policy of excluding Indians from officer corps was strictly maintained. तो पहले तो इनको ऑफिसर पोस्ट नहीं दिया जाता था, ये स्ट्रिक्टली मेंटेन हुआ. ओके, देन नंबर 7, nationalism refer to the feeling of oneness that emerges when people consider themselves as one nation. With reference to the growth of nationalism, answer the following. Name the first president of the Congress. Mention any 2 of its objectives. Second one, the press played an important role in the growth of Indian nationalism. Thus, the British saw the need for corps on the press. Mention any 3 points to analyze the role of the press in the growth of nationalism. Then number C, Lord Lytton's repressive policy led to the growth of nationalism. Mention any 4 policies enforced by him. Okay. So number 7. So number 7 का first one, number 7, name the first president of the Congress. The first president of the Congress was W.C. Banerjee. Then second bit, objectives of Indian National Congress. First one, to promote friendly relations between nationalist political leaders from different parts of the country. Second bit, to develop feelings of national unity irrespective of caste, creed and religion. Third point, to formulate popular demands and present them before the government. ओके, तो अब ये 3 पॉइंट मैंने लिख दिया. तो अब कैसे इनका डिमांड को गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट करना. सेकंड होता है पूरा माने इंडिया भर सब जगह में यूनिटी रखने के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियन. और नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर फ्रेंडली रिलेशनशिप to enforce friendly relationship among different political leaders in all parts of the country. Okay. Then second one, press, the importance of press, how the British were curbed the press. इसको कैसे दबा के रखे थे प्रेस को. The press aroused the feeling of patriotism and national consciousness among people. It not only mention any 3 points to analyze the role of press. वो क्यों दबा के रखे थे प्रेस को, क्योंकि point 1, the press aroused the feelings of patriotism and national consciousness among people. It not only criticized the unjust policies of the government but also played a vital role in infusing political ideas and patriotic sentiments of people. Third point, it helped Indian leaders to exchange views and made them aware of happenings in the world. Okay. The next one, Lord Lytton's repressive policy. Okay. लॉर्ड लिटन कैसे रिप्रेसिव पॉलिसी फॉलो किए थे. पॉइंट 1,
he reduced the maximum age for the Indian civil service examination from 21 to 19 years. ये थोड़ा याद दिला दूं ताकि 19 ईयर में वो +2 पढ़ते होंगे तब मोस्ट ऑफ द इंडियंस कुड नॉट एबल टू appear the examination. Removed the import duties on British textiles which destroyed the Indian industries. Third point, organizing the Grand Delhi Darbar in 1877 to proclaim Queen Victoria as the Empress of India with spending lot of money when millions of people of South India were affected by terrible famine. Okay, then fourth point, introduction of Vernacular Press Act. ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मीन्स इंग्लिश अगेंस्ट इंग्लिश इंडियन प्रेस का कुछ अधिकार नहीं था इंग्लिश के विरुद्ध में लिखने के लिए. इंडियन आर्म्स एक्ट, विदाउट एनी लाइसेंस इंडियन लोगों के लिए सुविधा नहीं था कोई वेपन या अम्युनिशन रखने के लिए, लेकिन ये ब्रिटिश लोगों के लिए सब चीज़ अलाउड था. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एंड इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 which were greatly resented by Indians as both of the act hurt the common interest of people. Okay, 6 हो गया, 7 हो गया. Then number 8. Read the number 8. Read the excerpt given below and answer the question that follow. The march which took place in India was led by Mohandas Gandhi to protest British rule in India. During the march, thousands of Indians followed Gandhi from his religious retreat near Ahmedabad to the Arabian Sea coast, a distance of some 240 miles. The march resulted in the arrest of nearly 60,000 people, including Gandhi himself. Name the march being discussed above. Which movement did the march lead to? In which year was that movement launched? Okay, then second bit, the movement which began with this march made a considerable impact on the social and political surroundings of the country. Analyze this statement by mentioning any 3 of its impacts. Third one, mention any 4 clauses of Gandhi heroine impact. Okay, so first point, first होता है नंबर 8. सो ये मार्च क्या था? सो दैट मार्च वाज दांडी मार्च. सो ये सॉल्ट टैक्स, वायोलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स. Okay, this was the part of civil disobedience movement. It was launched on March 12, 1930. You just see here only mentioned in which year. I gave your date. So this is not authentic because year means you have to only write 1930. So no need to mention the date. So impact of the movement. It widened the base of the freedom struggle and made people understand the significance of non-violence. After Dandi March, Gandhi ji gained worldwide popularity. एक वर्ल्ड फिगर बन गए. The government realized that it was very difficult to subdue the Indians now. गवर्नमेंट को महसूस हो गया जे इंडियन लोगों को इतना सहज में हम दमन नहीं कर सकेंगे. Then 4 clauses of गांधी हीरोइन इफेक्ट. ये थोड़ा मैं तुम्हें याद दिला दूँ. ये गांधी हीरोइन इफेक्ट, जो लॉर्ड हीरोइनी, वो जो ब्रिटिश काउंसिल का मेंबर थे, वो गांधी जी जब जेल में थे, फर्स्ट राउंड माने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए इनको जेल का अंदर रखा गया था. तब गांधी जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो इसी वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में वो योगदान नहीं किए थे. तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तो लॉर्ड इरविन इनके पास गए थे, जेल के पास, जेल में जो वो थे इनके पास गए थे और कुछ कंडीशन इनको दिए. बोले ये कंडीशन हम तुम्हारा फुलफिल करेंगे ताकि तुम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो तुम्हें भाग लेना चाहिए. तब इसीलिए वो हीरोइन गांधी के पास गए थे. वो क्या क्या इनका क्लॉजेस था, क्या क्या कंडीशन वो फुलफिल किए हुआ इंडियन के लिए, इनके बारे में दिया गया.
क्या हुआ? फर्स्ट वन, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पीपुल लिविंग नियर द सीशोर। बोले तुम सॉल्ट टैक्स के लिए तो डंडी मार्च किए थे, हम सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए अलाउ कर देंगे। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस, सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड assurance टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बोले तुम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दो, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लो। परमिशन ऑफ पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिक्विड एंड फॉरेन शॉप्स, तुम पिकेटिंग कर सकते हो लेकिन पीसफुल वे में। रिस्टोरिंग ऑफ द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रही, जो सत्याग्रही भाग लिए थे दांडी मार्च में, इनका जो जो होता है प्रॉपर्टी सब कॉन्फिस्केटेड हुआ था, ये प्रॉपर्टी इनको वापस दिलाया और वापस और रिफंड किया गया। ओके, देन नंबर 9, look at the picture given and answer the following questions. Describe the incident depicted in the cartoon. Second bit, mention any 3 points to analyze how Europe was rearranged as a consequence of the war caused by this incident. Third one, the Germans described the Treaty of Versailles as harsh and humiliating for Germans. Give any 4 reasons that justify this statement. Okay, so 9 number, first one. Archduke Francis Ferdinand, the Crown Prince of Austria, was assassinated at Sarajevo, capital city of Bosnia, on June 28, 1914. This is very important because this is one the immediate cause of First World War. This assassination was carried out by a secret society of Serbian extremists. Austria was blamed for this, and now Serbia was blamed for this, and Austria sent an ultimatum, AMATUM, to Serbia, making 11 demands. Serbia accepted most of them except those that would have led to the loss of sovereignty. On July 28, 1914, Austria declared war against Serbia. This ultimately culminated in First World War. Okay, 3 consequences of the First World War. 3 ruling dynasties, that is Russia, Germany and Austria, were destroyed. Okay, तब ये जो मैन थे ये सब भाग भाग हो गए। ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी बिकम सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये सबसे बड़ी चीज़। ऑस्ट्रिया हंगेरी जो एक थे तब इनको सेपरेट किया गया। यूएसए एमर्ज्ड एट द वर्ल्ड सुपर पावर। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर 2 पावर ब्लॉक वर्ल्ड में क्रिएट हुए, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एमर्ज्ड एट दी ओनली यूएसए एमर्ज्ड एट दी वर्ल्ड सुपर पावर। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड इन 1920 बिकॉज फर्स्ट ये पॉइंट को लिखना चाहिए, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1919 इम्पोज्ड सीवियर टेरिटोरियल लॉसेस ऑन जर्मनी। ये जो 1919 में डिफीटेड नेशन माने विनर नेशन माने बाई फोर्स डिफीटेड नेशन को परेशान करने के लिए मेनली टू जर्मनी के लिए बहुत हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइले के जगह में एक समझौता किए, तो अब इसको फोर्सिबली साइन किया गया। जर्मनी को फोर्सिबली साइन करना पड़ा। सो ये बहुत हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग जर्मन के लिए था। तब ये तो फेल्योर हुआ, जर्मन लोग मेनली हिटलर उसे नहीं माना। तब इसके बाद फिर 1920 में एक लीग ऑफ नेशन एक फिर बना, ओके, टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस। द रूल ऑफ ऑटोमन्स केम टू एन एंड। ऑटोमन एम्पायर जो ये होता है, सो एशियन कंट्री में ऑटो द कालिफ, तो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे माने ये हो गया, सेपरेट हो गया। ये सब वापस में क्या होता है, इंग्लैंड फ्रांस ये सब बांट लिए। ओके, सो ये हो गया। सो मेंशन थी पॉइंट। अच्छा, देन ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में लिखेंगे। तो कैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मन के लिए हार्श और ह्यूमिलेटिंग था।
The Treaty of Versailles was harsh and humiliating for Germany in the following ways. Very important question. Germany was forced to pay $33 billion as war indemnity. वार लॉस के लिए उनका ऊपर ज़बरदस्ती बोझ लग दिए जे तुझे $33 बिलियन देना पड़ेगा, और जर्मनी भी दिया. The area of the Rhine Valley was demilitarized and the German territory west of Rhine was to be occupied by the Allied power for 15 years. Danzig became a sea part in Polish territory. मतलब पोलैंड का सुविधा के लिए सी ट्रेड के लिए डेंजिंग को जर्मनी को दो भाग कर दिया गया, और डेंजिंग को ज़बरदस्त छीन के जर्मनी से पोलैंड को दिया गया. ओके. The German force was restricted to 1 lakh. Okay, or German army was restricted to 1 lakh, and her navy was reduced to 15,000 men. Her air force and submarines were banned. Okay, Germany had to cede part of her pre-war territory. युद्ध से पहले जो इनका टेरिटोरी था, इसको सब देना पड़ा जर्मनी को. किसको? टू डेनमार्क, बेल्जियम एंड चेकोस्लोवाकिया. ओके. देन और एक क्वेश्चन रहा. मैंने तुम लोग को कहा टोटल 5 क्वेश्चंस. 5 में से 3 इंडियन हिस्ट्री, 2 वर्ल्ड हिस्ट्री. ओके. 5 में से एनी 2 करना है. मैं पूरा 5 क्वेश्चन यहाँ लिख दिया ताकि तुम लोग को सुविधा होगा पढ़ने के लिए. ओके. देन नंबर 10. The United Nations Organization aims to maintain international peace. With reference to its organs and agencies, answer the following. What is the composition of the International Court of Justice? Mention any 3 functions of the General Assembly. C question. Gujarat's famed Garba dance received the Intangible Heritage Tag. Which agency of the United Nations is authorized to give this tag? Mention any 3 other contributions of that agency in the preservation of culture. Okay. Then number 10 1. So number 10 का 1 क्या था? What is the composition of the International Court of Justice? There are 15 judges chosen to serve a 9-year term selected by the Security Council and General Assembly. Every judge from a distinct nation elects its president and vice president for a period of 3 years. The court has the power to appoint its registrar. एक भी रजिस्टर को अपॉइंट करने का पावर कोर्ट का भी है. ओके. देन बी क्वेश्चन. Mention any 3 functions of the General Assembly. 3 functions of the General Assembly: to make recommendations for the maintenance of international peace and security, to make recommendations for the peaceful settlement of disputes, to appoint the Secretary General on the recommendation of the Security Council. Okay. Then number C. So यूनेस्को बारे में लिखेंगे. ये जो कल्चर को जो ऑर्गेनाइज करता, वर्ल्ड में कल्चर हेरिटेज को जो प्रिजर्व करके रखता जो ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है यूनेस्को. यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो उन्होंने कहा इसका 3 फंक्शन लिखेंगे. इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इनहेरिटेंस ऑफ बुक्स, वर्क्स ऑफ आर्ट and rare manuscripts. Okay. It gives encouragement to artistic creations in literature and fine arts. Third point, it provides funds to prevent monuments and works of art. Okay. So मैं तुम लोग को अगेन बता देता हूँ, ये सेक्शन बी का 5 क्वेश्चन बियरिंग 30 मार्क्स. So 2 from contemporary world and 3 from Indian histories. So total 5 questions I wrote here, and I am also giving you the notes so that you will be benefited. Okay, by and by I will also try to cover
other sample papers. Okay, which would permit me within such short interval of time, because all of you know exam is knocking at your door, so we should try our best. How much possible I will try my best to cover those portion, and also take speed any class which would be which would be benefited for you within this short time interval. Okay, today this much. Wishing you all the best. I remain. Thank you very much.